The phone that has absolutely set the nation on fire. It's made headlines every single way you can. A phone, a smartphone for 251 rupees. But with this phone has come incredible controversy. This is the phone that could take those people who've been left behind and take them to a whole new world. This is the phone that could change the digital divide and make it the digital connect. This could empower the entire nation. But can this phone actually exist? Will the company ringing bells behind this phone that claims they will be able to give this phone in millions at 251 rupees actually deliver? All through the day, we've had controversy after controversy. Today, right now, we're going to set all of that right. And we're going to tell you, can you actually get this phone for 251 rupees? With me is the president of the company, Mr. Ashok Chadha. Welcome. And Mohit Goel, managing director. I'm going to start with you, Mr. Chadha. First and foremost, the two biggest questions. We'll come to the smaller ones later. And I must start by saying all other things will get revealed right now, but congratulations, at least you've set the Indian mobile market on fire, right? But let's find out the two most important questions that are coming up. How can this phone be for 251 rupees? And Mohit, I'm going to ask you later, कितने फोन आप गारंटी कर रहे हैं कि मार्केट में? आपने एक डिलीवरी डेट दी है हमारे को कि जून तक आप अपनी पहले लॉट की डिलीवरी जो आप अभी बुकिंग ले रहे हैं वो खत्म कर देंगे. तो कितने फोन आप गारंटी करते हैं कि इंडियन मार्केट में आ जाएंगे? I'll start with you, Mr. Chadha. How can a phone of this quality, and it is a good phone, that's the first thing I started off yesterday, that surprisingly great phone, right? For 251 rupees. I mean, most people say the cost of the phone itself must be about 2,300 to 2,500 rupees. How? Thank you for the opportunity first, and we are grateful for this quick interview that you're having, because I hope it settles and keeps a lot of mind at peace. Well, first and foremost, before I come straight to the answer, I'd like to preface it by saying that we have a vision at Ringing Bells, and the vision is about empowering every Indian in the hinterland with a instrument that gives him the digital connect, as you rightly said, because indeed the digital divide is too huge. We thought about this, and the company was formed about 8 months ago with this vision in perspective. Having said that, therefore, come straight to the point and answer you. There is a lot of innovation in the entire approach to the company, entire approach to its products, entire approach to its customers, and entire approach to its vendor partners. We have built the entire strategy of pricing of this product on 4 pillars. The first is the pillar of technology. The second is the pillar of economies of scale. The third is the pillar of low marketing and selling costs. And the fourth is innovative marketing, which some of you describe as disruptive marketing. So we'll come to each of those 4 pillars. The first one is technology, what you rightly covered, and I won't spend much time. You are much more of an expert on this than I am. So here it is. You know the product, it's in front of you. It's there for all to see and experience. As far as the economy of scale is concerned, so far most of the mobile handsets are largely import-based. Today, with the policies announced by the current government, there is the Make in India initiative, the Digital India initiative, and the Skill India initiative. Our perspective as Ringing Bells is to bring and make the phone in India. When we make the phone in India, I have a 13.5% import duty hedge. We intend to pass that on to the customer, not to keep any money. Second is the economy of scale. The larger the numbers you produce, while the variable costs impact is less at reduction, the fixed costs get distributed over a larger number of volumes. Now, I've seen other people who are producing. They talk about lakhs, and I'm talking about multipliers of that. So you can imagine what we have in mind there. So that is the second bucket, the third bucket. And the fourth, when we have this handset available in the numbers that we expect, we have been speaking to a number of the people who want this route to market. And they have come across to give us extreme confidence. In fact, we are at stages where we have already executed NDAs with some of the leading people. We expect to conclude those. And the revenue that accrues to us from that, we will also use it to give it back to the customer. Why? Simply because we exist because the customer makes us exist. So the whole perspective is come down and see us. Here is the instrument.
251 rupees is the sum we've worked at. And if you want all breakups of the buckets, we'll share with you. Okay. Now, that's where we are. In terms of what will be the impact, fine. They'll be good. There'll be controversy. The final proof of the pudding is in the eating. And I think what you rightly said, you're much more experienced. I'm sure you'll talk about this. Right. That's where we are. Okay, but just to break it up in the most crude of manners, you've spoken about these 4 buckets. If I was to say ballpark figure, 2,000 rupees for the phone, economies of scale that absolutely and totally disrupt the market, I'll take 50% off. You're down already to 1,000 rupees. You get a 13% off for customs duty and everything else. You're down to maybe about 800 and something, right? Absolutely right. But there's still a difference of about 500-600 rupees, which nobody's being able to cover up. You're saying that's revenue from other partners? That is it. Absolutely bang on. That's what you're saying? Yes, that's revenue from other partners. And we will unfurl this to you as we go along, because we are under NDA and confidentiality. So let's go with what you've said, that you've actually done the impossible. You've got the phone for 251 rupees. But the other part of the proof of the pudding, Mohit, is कि आपने अब अपने वेबसाइट पे भी और इतने बड़े बड़े एड्स में भी, और आपने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी कहा है कि जितने भी फ़ोन ये पहले 3 दिन में जो आपने ओपनिंग की है बुकिंग की, उसमें जितने भी फ़ोन बुक होंगे वो आप डिलीवरी करेंगे जून तक, इसी साल के जून तक, यानी कि 3 महीने। Right. अभी से 3-3.5 महीने में सब आप खत्म कर देंगे। Right. ये कंट्रोवर्सी तकरीबन खत्म हो जाती है अगर आप अभी टीवी शो पे गारंटी कर दें कि इतने फोन तो हम पक्का डिलीवर करेंगे ही, उसके बाद देखेंगे, फिर बुकिंग खोलेंगे, मेड इन इंडिया का सारा यूज करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे यहाँ पे, वो एक अलग बात है। अभी क्या गारंटी है आपकी कि आप कितने फोन, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं शायद आप 1,00,000 फोन इंपोर्ट करके अपना नाम उस पर डाल के पब्लिसिटी के लिए आपने ये कर दिया, थोड़ा उसमें आप लॉस ले लेंगे और उसके बाद आप बोलेंगे ये तो खत्म हो गया, अब आप हमारा 3,000 रुपए वाला फोन खरीदें। 251 रुपीज में जून तक गारंटी डिलीवरी कितने फोन? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में 2 प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। ऑनलाइन हम इसलिए गए हैं कि जितने भी हमारे ऑनलाइन यूजर्स हैं उनको डायरेक्ट फ़ोन जाए। ऑफलाइन हम इसलिए गए हैं क्योंकि ये फ़ोन 251 रुपये का है और हम चाहते हैं कि ये फ़ोन बच्चे के बच्चे तक भी पहुँचे, तो इसलिए हम ऑफलाइन गए हैं। जो हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, C&Fs हमारे बनाए हुए हैं, उन सभी को हम ये फ़ोन देंगे। एक फ़ोन बुक होगा, एक आईडी सबमिट होगी, वो आईडी प्रूफ हमारे पास में आएंगे, तब हम फ़ोन रिलीज़ करेंगे उनको। 25 लाख फ़ोन का हम टारगेट लेके चल रहे हैं ऑफलाइन का। 25 लाख फ़ोन हम ऑफलाइन बुक करेंगे, ऐसे ही 25 लाख फ़ोन हम ऑनलाइन बुक करेंगे। जो हम 50 लाख फ़ोन 30 जून तक डिलीवर कर देंगे। हमने खुद से कहा है कि 30 जून तक हम डिलीवर करेंगे, ना कि 30 जून से हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। तो होपफुली हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में या मे बी मिड में हम इसकी डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे हम 30 जून तक 50 लाख फ़ोन की डिलीवरी। तो ये मैं लेके चलूं क्योंकि आपने एनडीटीवी पे अभी ये गारंटी दे दी है कि 50 लाख 50 लाख फोन्स बिल्कुल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन फ्रॉम द बुकिंग दैट्स हैपनिंग राइट नाउ, और आपके जो चैनल्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके थ्रू 50 लाख 50 लाख फोन्स विल बी अवेलेबल। दैट्स अ गारंटी दैट यू हैव गिवन। बिल्कुल right? ये गारंटी है। और इसके हमारे पास में हम इतना कह सकते हैं कि मुझे कंट्रोवर्सी का तो नहीं पता है कि अभी क्या बन रही है, लेकिन हमने अभी एक फ़ोन लॉन्च किया था 2,999 रुपीज़, जो कि 4G फ़ोन था 5 इंच में, जिसकी डिलीवरी हम 25 फेब को दे रहे हैं, जो कि हमने एयर भी की थी कि 25 फेब तक हम। उस पर भी बहुत कंट्रोवर्सी आई थी कि फ़ोन नहीं आएंगे, फ़ोन नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि वो फ़ोन ऑनलाइन बुक हैं। हम सभी के रिसिप्ट ऑनलाइन हम अपडेट करेंगे, न्यूज़पेपर में भी और ऑनलाइन भी, जिससे कि जनता को पता लगे कि हम फेयर हैं और जो रिंगिंग बेल कमिट करता है वो फ़ोन देता है। हम 25 अगर किसी को भी लग रहा है कि आप ये 50 लाख फोन 251 में देंगे कि नहीं, वो अगले कुछ ही दिन में देख लें कि आपका पहला जो प्रॉमिस है वो पूरा हो जाएगा। 25 फरवरी तक जितनी भी हमने ऑनलाइन बुकिंग की है वो हम 25 फरवरी तक डिलीवर कर देंगे। तो मतलब ज्यादा टाइम नहीं है पहला प्रूफ ऑफ द पुडिंग करने का। Proof of the pudding is eating. I think in this is the proof of the pudding is in the delivery of the product. That's right. And the first delivery is 25th February. I think that's quite incredible. इसीलिए सॉरी फॉर इंटरप्शन, इसीलिए हम चुप बैठे हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर ने भी कहा था कि मेरा बैट मेरा जवाब देता है,
ऐसे ही हमारे भी हम 25 को डिलीवरी कर देंगे, सबको पता लग जाएगा कि हमने 4G फोन 5 इंच में। कमिटेड है बिल्कुल। नहीं, 4G का फोन, 5 इंच का फोन, स्पेक्स भी उस फोन के अच्छे हैं बहुत, और 3,000 रुपए से कम में वो भी एक रेवोल्यूशन था। आई कंप्लीटली एग्री। अच्छा, कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जो अब आ रही हैं, क्विक फायर में अब चलते हैं कि ये भी कंट्रोवर्सीज भरी हो जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आर एंटायर पॉइंट इज कि एक्चुअली अगर एक कंपनी 251 रुपीज में इस कंट्री को एम्पावर कर दे, so what else could anyone ask for? So let's find out कि और क्या जो छोटी छोटी controversies आ रही हैं। पहले तो we've started off with the booking starting today and your site and your payment system crashing. Now, on top of the controversy that we were having anyway, this has led to more skepticism, right? Can you tell us what's happened and when can people actually book it in any amount of time and space that they can? This morning, the deluge of bookings and the hits that we had, even the payment gateway like CC Avenue did not plan for it, or we thought it would be enough, or our service is on Amazon and even they couldn't get that right. So as I speak to you, very quickly we saw this happening, so we've put in our regrets to the public and we are very grateful. We were experiencing 63 lakh hits on every second. It's a huge amount. And now as I'm talking to you, those are being rectified, and I hope what we've said that we've sought for 24 hours, we expect it to be much earlier, because the two leading companies, as I've just named to you, are at it for a solution as I So you're saying that maybe by sometime today at night, late or early tomorrow morning. Let's leave it at tomorrow morning. Should be Back to anybody who normal. wants one can actually go in there and book a phone, right? Perfect. Okay. All right. कई लोग पूछ रहे हैं ये कौन सी कंपनी है, कहां से एक कंपनी आ गई जो 5 या 6 महीने पुरानी कंपनी है, कभी नहीं सुना था इस कंपनी के बारे, कौन लोग हैं इसके पीछे? तो थोड़ा सा बताएंगे बहुत ही संक्षेप में कि कौन है रिंगिंग बेल, कौन है इसके डायरेक्टर्स, और कहां से आपने एक ये रेवोल्यूशन कर दिया जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया, आप कैसे कर पा रहे हैं? बिल्कुल। मैं अमेठी पास आउट हूँ, नोएडा से मैंने MBA किया है। पहले से ही कुछ मन था कि देश के लिए कुछ नया करूँ। तो वैसे मैं बेसिकली शामली से बिलोंग करता हूँ। इट इज़ 90 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम नोएडा। तो वहाँ पे अपना कमोडिटी का अच्छा बिजनेस है, 30 साल से वो हम बिज़नेस चलाते आ रहे हैं। तो कुछ अपना पहले से ही मन था कि देश को कुछ दे। जैसे मोदी जी आए, मोदी जी मेक इन इंडिया लेके आए, तो 7-8 महीने से हम उसमें मेहनत कर रहे थे कि हम कैसे क्या कुछ दे सकते हैं, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया। तब माइंड में आया कि हम देश के बच्चे बच्चे को फ़ोन दें, एक ऐसा फ़ोन, क्योंकि आप जानते हैं कि देश में 2 करोड़ फ़ोन महीने के बिकते हैं, जिसमें से 30% फ़ोन ही स्मार्टफोन बिकते हैं, बाकी 70% फ़ोन फीचर फ़ोन बिकते हैं, जिसके प्राइस अराउंड 700 to 1000 है। तो हमारी यही प्लानिंग थी, हम चाह रहे थे कि जो 70% फीचर फ़ोन है ऑल ओवर इंडिया टर्न हो जाए स्मार्टफोन पे। लेकिन क्योंकि अभी इन हाउस हमारे हाथों में वो बजट नहीं होगा कि हम एक साथ में 2 करोड़ फ़ोन महीने के दें, इसलिए हमने 50 लाख से स्टार्टिंग की है कि हम 50 लाख फ़ोन जून तक दें, और जैसे जैसे हम अप्रैल से डिलीवरी स्टार्ट करेंगे ऐसे ऐसे ही हम आगे ऑर्डर और लेते जाएंगे, और ऑल ओवर इंडिया होपफुली हम 2016 के लास्ट तक काफ़ी क्वांटिटी में फ़ोन दे देंगे।